Begumpur is one of the 7 mosques said to have been built by Khan-e-Jahan Janan Shah, who was the Prime Minister of Firoz Shah Tughlaq. There is a debate as to whether the mosque was built during Muhammad bin Tughlaq's or his successor, Firoz Shah's reign. Evidence is pointing more towards the latter, as Jinnah Shah, Firoz Shah's Prime Minister, has constructed many mosques with similar architectural motifs. The mosque has a huge courtyard of about 1,000 square meters. The arch at the main entrance is covered by a large dome. The verandas on the north and south have 8 domes each, while those on the east and west have 7 domes each. The corridors are pierced with gates on the north, south, and east with rows of windows on either side, the east gate functioning as the main entrance. Elements of Timurid architecture which dominated the landscape of Central Asia can be found here, especially in the design pattern and geometrical layout. Begumpur Mosque is like a twin to its counterpart at Jama Masjid, similar in size but completely opposite in its present state to the old Delhi Mosque, which is still in use. The mathematical symmetry of Khirki Masjid as well can be found in Begumpur, especially on the roofs. This is a 3LD prayer hall meant for men. We can see it has a long length and is deep as well, allowing many individuals to be present at once. But when men would come for their weekly Friday namaz, the lines of men would often flood into the courtyard. In one corner of the mosque, we found a small doorway through which we entered into a dark and cramped passage. This was separated from the main mosque, which is the Mardana Masjid for men. It is a medium-sized room with high ceilings that used to function as the Zainana Masjid, which is the prayer room for women. Here we see a beautiful mihrab to mark the direction of prayer. A path used to connect this Zainana Masjid to the palace at Vijay Mandal, so the royal ladies could easily and privately come to the mosque for namaz. Though the initial few arches have broken and crumbling roofs, most of the arches in the complex, as we see, have been repaired. Some parts of the roof have caved in majorly. We can observe that restoration is not going half as well as it should. The ASI has been trying to restore the monument for quite a while now, but do not show up for repair work and restoration as often as required. On the other hand, encroachment also poses a problem. Drunkards, gamblers, and drug addicts all have camped onto the courtyard and dark chambers of the monument. There is supposed to be an ASI guard who can show you around on request. Here we see a room made for leisure for the royals, now locked up and being used to store material for repair, looking as if it has been there for quite a while now. हो गई 10-12 साल हो गई। पैदाइश ही है हो गए मेरे को 52 साल 55 साल हो गए। बचपन से रह रहा हूँ। मैं बचपन यही करी। हाँ, तो आप यहाँ पे बचपन से रह रहे हो? हाँ जी, गाँव है हमारा प्रॉपर। वहाँ सीरत में लोग आते जाते रहते हैं, अच्छी चीज़ है देखने लायक। बच्चे घूमते खेलते हैं शाम के टाइम में। यहाँ पड़ी होती है अभी शाम को देखना यहाँ पे लोग बैठे थे बच्चे ऊपर नीचे सर दोपहरी में भी आपको मिलेंगे। अच्छा, हाँ छोटे छोटे थे 7 दिन यहीं सोया करते दोपहरी में शायद दोपहर यहीं रहते थे। हाँ खेलना कूदना बचपन में खेल भी रहते थे वैसे भी घूमने आते कभी हमारे दादाजी रहा करते थे तो ये बल्लू खाना जो हमारे दादाजी का नाम था बल्लू तो देखते खूब जाते हैं तो घूमते फिरते भी हम जो हम भी यहीं बैठा करते थे छुट्टी वाले जो अपने संडे हुआ। हाँ मरम्मत के लिए जो मरम्मत हुई है जल्दी पत्थर पड़ा हुआ मरम्मत के लिए बहुत टाइम से नहीं किया 2 साल भर से वो तो कोई देखा नहीं जी 1-2 बार आए थे वो भी लगाए थे यहाँ पे अंदर किले के अंदर ही बड़े बड़े वो उसका। हाँ देखो इसकी मरम्मत भी हुई थी अब काफ़ी इसमें से नहीं आ रहे हैं क्यों इसका टंडा खुलता है जब आर्कोलॉजिकल जो आदमी होते हैं ना उनके टंडे खुलते हैं जब उनका टंडा पास होगा ठीक है जिसने काम कराया बाकी का छोड़ के अब काफ़ी टूट है अभी अब देखो टूटा हुआ है अभी मरम्मत नहीं करी उन्होंने तो नहीं होती जी नहीं ये नहीं पता। ये पहले कभी दानव के राजा महाराजा के बने हुए हैं अब के नहीं है बहुत हमारे जन्म से पहले जब तक मैं पैदा ही हूँ ये तो काफ़ी साल से अब पता कि किसने बनाया ये।
नहीं आप रहते हैं, गार्ड 2 गार्ड रहते हैं यहाँ पर। नहीं गार्ड नहीं रहता। गार्ड तो नहीं देखा हमने, गार्ड नहीं आते आप? पीछे घूमर जाता है। गार्ड आते हैं, इसके अंदर गाड़ी भी लगे हुए हैं। अभी साहब आज संडे है, अच्छा छुट्टी होगी। नहीं सरकारी के थ्रू कर दिया था, पहले मस्जिद थी, उन्होंने वो सब भगा दिए थे। अच्छा, कह रहे थे कि यहाँ पे नमाज वमाज कोई नहीं पढ़ेगी। अच्छा, मस्जिद नहीं है, ये गुम्मट है। और अपने बंद कर लिया, पूरा एरिया खुला था। ये तो अभी बंद हुआ है, ये तो सब मतलब ये ग्रिल वगैरह अभी लग गया, ये गवर्नमेंट ने लगा। और किले में और कोई भी रहता था आपकी दादा दादी के हमारे सिवाय? जितने भी इलाके में काफी आदमी थे इसके अंदर। किले में रहते थे? हाँ जी, ये यहाँ पर रहते थे इसके अंदर। हाँ। जब मार काट हुई, जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो यहाँ से इन्होंने अंग्रेजों ने निकाल दिया।